Okay, guys. So till now we covered the rank of the matrix. Now we are taking a very interesting topic, that is eigenvalues and eigenvector. Mostly students are confused in this topic. They do the calculation. There is no problem in the calculation, but they don't know why they are doing so. ठीक है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कर क्यों रहे हैं, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग सो. Even though maximum students don't know what is the sense or meaning of eigen. Okay, so basically in this lecture definitely I will solve many problems on this eigenvalue and eigenvectors here. But first of all, let's try to understand what is the sense of these terms and what is the meaning of these terms. ठीक है, इनका मतलब क्या आपके पास में. Okay, so I will try to tell you that is how or what is the concept behind the eigenvalue and eigenvector. So I hope so that is you all are aware about the transformation. Okay, so during the transformation we are simply converting one thing into some another thing by using some particular thing. Okay, or particular you can say the scalar things or other things. Like let's suppose I want to transform a quantity A into quantity B. Okay, मुझे quantity A को quantity B में convert करना है. So how can we understand the transformation here? So transformation is like a function. Okay, it's like a function here. Means I'm simply saying y equals to f of x. Let's suppose this is ax. Okay, that I'm saying. So transformation is like a function. Means in this case when you put input here, अगर आप कुछ इनपुट रखेंगे, in that case you will get some output here. So actually y is the transformation of this x by taking this quantity here. ठीक है, आपने एक वैल्यू ली x की, based on this one you put the value and you will get some value of y. In that case you are simply transforming x into the y. ठीक है, आपको y के टर्म में उसकी कुछ वैल्यूज मिल रही है. ठीक है, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. नाउ फंक्शन लाइक एनीथिंग. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे टाइप, काफी टाइप कर सकते हैं, लाइक दिस वन. Okay, let's suppose this is another transformation, or let's suppose there's a linear here. Okay, so for the eigenvalue and eigenvector we simply talk about the linear transformation. ठीक है, हम उसकी बात करेंगे आपके पास में कि उसका सेंस क्या है. तो eigenvalues और eigenvector पे जाने से पहले let try to understand few basic things about the linear transformation, so that काफी जो टर्म्स हैं आपके पास में जो इन्वॉल्व होंगी, ओके, इन केस ऑफ eigenvalue and eigenvector, आप उसके बारे में क्लियरली उसको समझ पाएंगे. ओके, so let's suppose if I'm taking a grid here, एक ग्रिड आपके पास में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ओके, so this is our origin point. ठीक है, ये हमारे पास में origin point है यहाँ पे. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास में, और जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्लियर होगी डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस वन. तब आपको पता है कि आप क्या करें एक्चुअली. ओके, इन दिस केस लेट आई एम टेकिंग दीज गैप्स ऑफ इक्वल स्पेस, लेट आई एम सेइंग 1. ठीक है, 1 का गैप रख रहा हूं आपके पास में. सो ऑब्वियसली देयर इज अ ग्रिड हियर जो मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज 1 हियर, गैप ऑफ 1. सिमिलरली ओवर फॉर दिस वन. ओके, सो इन दिस केस ऑब्वियसली आई एम यूजिंग द 2D सिस्टम हियर. 2D सिस्टम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं. सो दिस इज आवर ग्रिड हियर, ये ग्रिड है हमारे पास में. ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. ठीक है, बेटर कि आप भी साथ साथ में ड्रॉ करें, so that आपको भी better understanding हो इस चीज के बारे में. So this grid is almost prepared here. Okay, okay, now so obviously that I'm saying this is our y-axis, this is our j-axis, i cap j cap. Okay, so obviously in this case if you are talking about the unit system or unit vector here, you can say this value is our I cap and this value is our j cap. Okay, so this is our I cap, this is our j cap. Okay, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक. Now let's suppose if I'm taking a velocity vector, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके पास में यहाँ पे. So I'm saying let's suppose there is a velocity vector v here. एक velocity vector हमारे पास में v, okay, that is defined as -1 I cap plus 2 j cap. Okay, so I'm saying this value is -1 I cap and plus 2 j cap. So if you want to represent this velocity vector over this field, इस field के ऊपर आपको represent करना है तो आप कैसे represent करेंगे? So obviously the value of x is -1, the value of j is +2. Okay, so this will be our velocity vector here. कुछ ये velocity vector आपको मिलने वाला है. Okay, that is our velocity vector here v.
Now if you want to represent this velocity vector in terms of column vector, so you can also say that is it will like this one. You can say this will be -1 and 2 here. So this is the column vector also. Okay, you can see here this is the first value for the x here, second value for the y here. Okay, so this is a column vector here. Okay, then now I'm saying that is our grid. जो हमारे पास ग्रिड थी, that is I cap and J cap, इसको मैं चेंज कर रहा हूं. Okay, now that there is a new grid here, so the value of I cap I am taking here. Now I'm saying the value of I cap is this one. Value of I cap is this one. Let I'm saying this is I cap dash. Okay, so if you want to present the I cap dash in terms of column vector, so what will be the value here? So I think the value of y is -1, the value of x is 0 here. So you can say this is 0, -1 here. Okay, now the vector j, okay, let I'm choosing the vector j is like this one. कि vector j हमारे पास में कुछ ये हो गया है. This is our vector j cap dash. Okay, so the vector j cap dash की जो हम बात कर रहे हैं आपके j cap dash. So what will the value of j cap dash? I think this value is 2 here and 0 here. So this is 2 and 0. Okay then. Okay, so now this is our new field. ठीक है, ये हमारे पास में अब नई फील्ड आ गई है. नाउ इफ यू वांट टू फॉर्म ए ग्रिड फॉर दिस फील्ड, ठीक है, अगर आप इसको इस फील्ड के लिए ग्रिड आपको फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? सो ऑब्वियसली इनिशियली वी फॉर्म ए ग्रिड ऑफ टेकिंग दीज वेक्टर्स, दैट इज आई कैप एंड जे कैप. Similarly for this case, now we'll form a grid here taking I cap size this one, J cap size this one. Okay, so obviously here will be the line for the J cap cap. First line मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. Okay, second line will be here. Second line कुछ ये होगी. Means now the gap is 2 2 here. Okay, this gap is 2 here, this gap is 2 here. Similarly, this gap is 2 here. This side from the origin, origin must be same. Origin must be same. So this gap is also 2 here. For the I cap, the gap will be 1 here, like this one. Okay, for the I cap, the gap will be 1 unit here. So this is the gap for the I cap here, you can say. So now our grid is changed. Okay, and the changed grid is having the vector like this one, 0, -1 and 2 0. Okay, ये आपके पास में vectors हैं. Now let's suppose now for this changed grid I want to calculate that is what is the change in V. ठीक है कि V में आपके पास में क्या चेंज हुआ. So I simply show you there is the value of V was -I cap and plus 2J cap for the initial grid. ठीक है, जब आपका यूनिट था. Now the vector V cap dash become -1 I cap dash and plus 2 J cap dash. Okay, ये आपके पास में नई वैल्यूज की बन गई है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वन. ठीक है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो इन दिस केस एक्चुअली आई डू सम ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमने क्या किया? नाउ इन दिस केस द v इज गोना ट्रांसफॉर्म इनटू द वेक्टर v डैश ड्यू टू दिस ग्रिड चेंज. ओके, जो वेक्टर v आपके पास में है वो आपके पास में ट्रांसफॉर्म होने वाला है बाय दिस वन. ठीक है, इसके थ्रू इनटू दिस वन. सो एक्चुअली आई कैन से दैट इज v is gonna change due to the I cap vector is 0, -1, J cap vector is 2 0, and this matrix will transform this vector into the V cap dash. ठीक है, ये आपके पास में इसमें ट्रांसफॉर्म होगा. So what is the vector V here? So in this case we are simply saying this is -1 2, then this is 0 -1 and 2 0. Okay, now let's calculate this value here. So in this case we'll multiply here. So first we'll simply say that is this column, this row. ठीक है, so -1 into 0 plus 2 into 2, then this column, this row. So this is -1 into -1, then plus 2 into 0 here. Okay, in this case we'll get here, this becomes 0 here, so this value become 4 here, this value become the +1 here, this value becomes 0 here. So we'll get our new vector V cap dash will be 4 1. Means in this case the value of vector will be 4 on the x-axis, that is 1 2 3 4 on the x-axis and 1 on the y-axis here. So our new vector V dash will be like this one. ठीक है, this will be like this one.
So this will be our new transformed vector. Okay, this is the new transformed vector due to the ग्रिड चेंज. ठीक है, ग्रिड की जो आपके पास में डायमेंशंस थे वो आपके इसमें चेंज होने की वजह से ये आपके पास में न्यू वेक्टर आपको फॉर्म हुआ. इट मींस इन दिस केस दिस वेक्टर फील्ड, ओके, और दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग दिस वेक्टर इनटू दिस वन. ओके, ये मैट्रिक्स जो आपके पास में है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस वेक्टर इनटू दिस वन. इस वेक्टर में इसका इसने ट्रांसफॉर्म किया. सो यू कैन क्लियरली सी हियर दैट इज अकॉर्डिंग टू द इनिशियल ग्रिड फॉर दिस वैल्यू द वेक्टर वाज हियर. But when the field or when this grid is going to change here, in that case this vector is going to transform into this one. Means ये आपके पास रोटेट भी हुआ, ओके, फील्ड चेंज करने से आपके इसमें रोटेट भी हुआ और ये आपके पास में स्केल अप भी हुआ. ओके, इट मीन्स when we are thinking about the transformation, in that case some matrix is gonna transfer or transform, actually not transfer, transform a vector into another vector. ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास में एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है दूसरे टाइप के वेक्टर में. ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर सो आई कैन क्लैरिफाई. आपके पास जो डाउट्स है वो आपको क्लैरिफाई कर सकूं. सो इन दिस केस लेट आई एम रिमूविंग दिस वन हियर. ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं एंड लेट वी आर आवर इनिशियल जो हमारे पास में ग्रिड था दैट इज आई कैप जे कैप, उसी की हम बात करें. सो दिस इज आवर जे कैप, दिस इज आवर आई कैप, I cap, J cap. Okay, that's the same grid here. Now in this case, I'm saying, let for this one, for this grid, I'm taking a vector here that is the resultant of this vector, that is I cap or J cap resultant. Right? Let I'm saying this is the vector here. Okay, I'm choosing this vector here. So obviously, let's suppose this vector is a vector here. Like if I'm saying this is the vector A here, in that case, the vector value here is what? 1, 1. Okay, now there is one more vector here this side. एक और वेक्टर लिया हमने इस साइड. लेट्स सपोज दिस इज द बी वेक्टर. ओके, दिस इज द बी वेक्टर हियर. इन दिस केस आई थिंक द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इज x is -1, y is 1 here. Okay, so this is -1 and 1 vector here. Okay, now I am changing our grid again. Okay, in this case I am taking our I cap. Okay, I cap है वो मैं लेके चल रहा हूँ कुछ ये. So that is our new I cap in the red one. ठीक है, that is our new I cap, and obviously this value is 1, 2, 3. So x is 3 here and y is 0 here. So I cap is 3, 0, and z cap, let I'm taking this is this one, j cap, sorry. This is our, I'm choosing this example here so that I can clear your understanding about the eigenvalue and eigenvector. So this is our new vector j cap here. Okay, the value is x is 1, j is 2 here. So this is 1, 2 here. Okay. So now this is our field here. This is our new grid here. So obviously in this case, when you try to form this grid here, आप इस grid को जब develop करेंगे, so I will add this vector here. मैं इसको यहाँ पे add करूँगा. So let's suppose this value is going to here because this is 3 here. So 3 यहाँ पे जाएगा. Then it will be like this one. ठीक है, ये कुछ यहाँ पे add होगा आपके पास में. Okay. Similarly, this is going down here up to this point here, and this is gonna be here around, I think. Okay, so this will be our new grid here. ठीक है, तो कुछ grid आपके पास में ऐसे form होगी. Now on this side here, this is again 1, 2, 3 here. This is 3 here. Okay, this is 3 here. This side. ये 3 exactly मैंने 3 side ले लिया आपके पास में. Then in this case, the vector will be here. So the grid will be like this one. ये grid कुछ ऐसी होगी आपके पास में. Okay, so the grid will behave like this one. ठीक है, grid का behavior कुछ ऐसा होगा. So in this case, the new grid will be like this. ठीक है, new grid आपके पास में कुछ ये होने वाली है इस केस में. ठीक है, this will be new grid here. Okay, so this is 1, 2 here. So again, this is here. So you can clearly see the new grid will be linearly transformed. ये tilt हो गया हल्का सा आपके पास में. That is a new grid. It is tilted here. Okay, that is our new grid for the new I cap and j cap. Okay, so that is our new grid here. Okay, now I think the vector A was the resultant of I cap and j cap. Okay, so the new resultant for this new I cap and j cap I think will be like this one. ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा आपके पास में. So you can see here that is as the new grid we taken here, the vector A
इट सिंपली रोटेट एंड स्केल अप, ठीक है। वेक्टर ए आपके पास में रोटेट भी हुआ और स्केल अप भी हो गया, ओके। नाउ फॉर दिस वन, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं आपके पास में वेक्टर बी, सो दिस इज द सम ऑफ दिस वन, दैट इज द माइनस आई एंड प्लस जे हियर. नाउ इफ यू टेक for the new one, because this is also the resultant of this one and this one. Now for this one and this one, जो कि आपके पास में न्यू ग्रिड है, the resultant will be like this. ये कुछ रिजल्टेंट आपके पास में कुछ यही होगा. It will be like this one. This will be the new resultant here, B cap. So what is the difference in A cap and B cap after the grid change? ठीक है, grid change होते हैं आपके पास में A cap और B cap में आपके पास में क्या डिफरेंस हुआ? So I think in this case ए कैप, जो ए कैप आपके पास में जो एक वेक्टर था आपके पास में, दैट इज रोटेटेड ऑल्सो स्केल अप. इट मीन्स वेक्टर ए जो है आपके पास में वो अपनी स्पैन से हट गया है. सो दिस वाज द स्पैन, ओके, दिस वाज द स्पैन ऑफ वेक्टर ए हियर, ओके, ये इसके स्पैन थे, ओके. सो आफ्टर द ग्रिड चेंज हियर, देन इन दिस केस इट इज रोटेटेड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट नाउ अवेलेबल और इट्स स्पैन, इट इज नाउ हियर. ये जो वेक्टर आपके पास में, ये आपके पास में रोटेट करके यहां पे आ गया और स्केल अप हो गया. बट इफ यू नोटिस अबाउट द वेक्टर बी, इनिशियली द स्पैन ऑफ द वेक्टर बी वाज दिस वन. इनिशियली कुछ यही स्पैन थी आपके पास में, एंड आफ्टर द ग्रिड चेंज, आई थिंक दिस वेक्टर बी इज ऑल्सो ऑन द सेम स्पैन. ठीक है, ये वेक्टर बी आपके पास में ये सेम स्पैन पे आपके पास में है, बट इट्स सिंपली स्केल अप. ये आपके इसमें क्या होगा, स्केल अप हो गया. And similarly, if you see here about the I cap, okay, so initially the I cap was this one, but after the grid change, it simply maintain on its span, ठीक है, अपने span पे है, but it's simply scale up. But this is not true about the J cap. Initially J cap was here, so its span was this one, इसकी span कुछ ये थी आपके पास में, but after the grid change, it will occur at the new span here, so अपने span से हट गया है. It means the vector B cap and I cap, okay, the vector B and the I cap are on the same span, okay, अपनी ही स्पेन पे आपके पास में मेंटेन है. इट मीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सम वेक्टर्स विल बी मेंटेन्ड ऑन द सेम स्पेन. ठीक है, वो आपकी स्पेन पे ही, खुद की स्पेन पे आपके क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे. एंड दीज वेक्टर्स आर डिफाइंड एज द आइगन वेक्टर्स. These vectors, because these two vectors after the transformation are maintaining on the same span, so these vectors are defined as the eigen vectors. Okay, and what is the sense of eigen? Eigen means own, खुद का, means they are not deflecting from their own span. ठीक है, वो अपने स्पेन से नहीं हट रहे. ओके, सो आइगन वेक्टर्स बेसिकली दोज वेक्टर्स दैट इज आफ्टर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी अपनी ही स्पेन पे आपके पास में मेंटेन है. ओके, अपनी स्पेन से आपके पास में हटे नहीं है, इवन दो दे आर सिंपली गोइंग टू बी स्केल अप और स्केल डाउन. वो स्केल अप हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं. अब कितने हुए? सो लेट्स सपोज इनिशियली दिस वाज द आई कैप, ओके, और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वैल्यू इज दिस वन. सो कितने आपके इसमें चेंज हुआ? इनिशियली दिस वैल्यू वाज 1, नाउ दिस वैल्यू इज 1 2 3. दिस वेक्टर आई कैप इज स्केल्ड अप और स्केल्ड बाय एन अमाउंट 3 अमाउंट्स आपके पास में स्केल हुआ, आपके पास में स्केल अप हुआ ऑन द सेम स्पेन. नाउ सिमिलरली दिस वेक्टर, ओके, ये वेक्टर आपके इसमें क्या था, माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप. नाउ आई थिंक दिस इज माइनस 2 आई कैप and plus 2j cap, okay, minus 2i cap, okay, from here to here, and plus 2j cap, means this vector is scaling up on the same span by an amount 2 or by a scalar 2, by a scalar quantity 2. So this vector scale up by a scalar quantity 3, this vector is scale up by a quantity 2. So the values through which they are scaling up or down, okay, scalar उसके साथ में क्या बिहेव कर रहा है, so the values through which the vectors are scaling up or down on their own spans, these values are defined as eigen values. Okay, so means
Eigenvectors are those vectors which are simply scaling up or down on the same span, and the values through which they are scaling up or down are termed as eigenvalues. Okay, so in this case, or in this section of mathematics or linear algebra, we are simply talking about the eigenvalues and eigenvectors during the linear transformation. Okay, कि linear transformation आपके पास में जब हो रहा है, okay, in that case वो कौन से वेक्टर्स हैं जो आपके पास में सेम स्पेन पे मेंटेन है और कितनी वैल्यूज से आपके पास में स्केल अप और स्केल डाउन हुए हैं. सो द इनिशियल डेफिनेशन that is given, and when the eigenvalues or eigenvectors started, they are providing with a term like this one, that is ax equals to y. Okay, now in this case x is a column vector. Okay, I am saying this is a is matrix or square matrix, actually square matrix. This is column vector. This is also column vector. So what's happening in this case? In this case, we are simply using a matrix A to transform the vector x into the vector y. Okay, we are trying to find out a matrix A. We are trying to find out a matrix A to transform the column vector x into a column vector of y, that is here. Okay, so simply we'll start from the equation ax equals to y here. Okay, so I think this physical interpretation of eigenvalue and eigenvector is clear. And again I'm telling you, there is the word eigen meaning own. Okay, means uska khud ka. Okay, so I think this is clear. So after understanding the physical sense of eigenvalue and eigenvector, let's try that is what is the sense of eigenvalues and how we can find out the eigenvalues. Okay, so I told you that is the basic equation is simply what, that is ax equals to y here. In this case यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, that is column vector x is transformed into column vector y by means of matrix A. Okay, in this case we simply want to transform the column vector x into column vector y here. Okay, now let's suppose if I'm saying let column vector x can be transformed such as lambda x equals to y here. Okay, in this case lambda is what? Lambda is scalar. Okay, ये हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है. So sorry, in this case I'm saying that is x can also be transformed into y by simply multiplying a scalar value lambda here. Okay, so I already told you that is if this is our grid here and let's suppose this is what our x vector, and as I told you that this is a eigenvector, in that case it will maintain or it will be on its own span. Okay, it can scale up or scale down. So let's suppose obviously in this case the transformed vector is this one. Okay, let me change the color here. Let transformed vector y is this one. This is our vector y here.
okay, and this is our vector x here. So x that we want to transform into y, it's simply transformed if we multiplying some scalar value to this one. अगर हम x में कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, इन दैट केस वी सिंपली गेट द वेक्टर y here. Okay, because in this case we don't want any rotation or something. In this case we simply want to scale up or scale down. So let's suppose if I'm multiplying 2 here. So let's suppose if I'm saying y is twice of x. If y is twice of x, in that case I can say y is simply equals to 2x. So lambda is 2 here. Okay, let's suppose if this y is this side, ये आपके पास में y इस साइड में आपके पास में. Okay, let's suppose if I'm saying y is like this one. That is our y that we want to transform here. So let's suppose if in this case I'm saying the y is 3 times of x or minus 3 times of x, means the direction is also changed. In this case the lambda will be what? Minus 3. Okay, so in this case we are simply saying that is let column vector x can be transformed such as lambda x will be equals to y here. Okay, so by using this concept and this one, we can say that there is ax that is equals to y also will be equals to lambda x here. So from here we can say that there is ax will be equals to lambda x. You can simply say that. Okay, now in this case you can see here, that is here x, that is the vector, is multiplied to a matrix, but here the vector x is multiplied to a scalar. But we both side we want to maintain the same dimensions. So if this side is a matrix side, so this side must be also a matrix type. Okay, तो अगर ये matrix के type हमारे पास में, so this must be a matrix. So we can also write this one like this one, that is lambda I x. Here I is the identity matrix. Now both side dimensions are equal. Now by utilizing this equation here, I can say ax minus lambda I x equals to 0. Okay, then if we are taking the x is common here, so we can say a minus lambda I x equals to 0. We are getting this equation here. Okay, ये equation हमें मिलती है यहाँ पे. Now by seeing this equation, I am simply saying that is here, ठीक है, मैं इस पार्ट को यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ आपके पास में. Here lambda is unknown scalar and is known as eigenvalue. Okay, obviously I told you that is the quantity or the amount through which the vector is scale up or scale down will be simply defined as the eigenvalue. So in this case the lambda, that is the unknown scalar, is known as eigenvalue. वो आपके इसमें क्या होगी? Eigenvalue होगी. Eigenvalue is also known as characteristic value, or you can say proper value, or you can say latent value. Okay, eigenvalue is also known as characteristic value, proper value, or latent value. Okay, so here lambda will be the eigenvalue. ठीक है, इसकी वैल्यू आपके इसमें क्या है? Eigenvalue. And x is what? Non-zero vector is known as eigenvector. Okay, here x, that must be non-zero. Why non-zero? Because let's suppose if you are saying there is some zero vector. So what will be span of this zero vector? So the span will be like this one, span will be like this one, span will be like this one. Span can be anywhere. Okay, so you can't decide in that case. So in that case the x must be non-zero vector. आपके इसमें क्या होना चाहिए? एक non-zero vector होना चाहिए. So in this case the x that is a non-zero vector is known as eigenvector here. Okay, तो यहाँ पे lambda will be the eigenvalue and
x will be the eigen vector. वो वेक्टर जो अपने स्पेन पे मेंटेन्ड है, कितना स्केल अप है, कितना स्केल डाउन है, that is decided by this value here. Okay, so these two value will define the eigenvalue and eigenvector here. Okay, so from this term, that is, as x is a non-zero vector, in that case I think we can say that there is x can't be zero here. ठीक है, so in this case you can say x can't be zero, so a minus lambda I is equals to 0. ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Okay, so that we are providing the basic equation in this case we are saying. Okay, तो यहां पे हमें आपके पास में एक बेसिक इक्वेशन मिलेगी, that is what, that is a minus lambda I. I is what, I is the identity or unit matrix in this case. Okay, or what is the a here? A is the square matrix. Okay, so you can say here a is square matrix, lambda is unknown scalar or eigenvalue. Okay, and I is unit square matrix. Okay, so this is how we'll get our basic matrix. Okay, और basic matrix हमें मिलने वाली है. So now from here, that is from the equation of a minus lambda I, we can start our calculation to finding out the value of lambda, that is the eigenvalue, and the respective non-zero vector, that is x, that is the eigenvector. Okay, so I think from this point of view, in this is clear in your mind, that is what are exactly we are doing here. Okay, और व्हाट आर द सेंस ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इनका मतलब क्या है, निकालने क्यों आपके पास में, बिकॉज बच्चे निकाल तो लेते हैं आपके पास में, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, बट जब उनको पता रहता है कि ओके दिस, ये आपके इसमें के फॉर्म में आ रहा है, सो इसका मतलब क्या है, तो दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. सो देयर इज नो नीड ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, कंफ्यूजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू बाय सिंपली सेइंग दिस वन. आप इसको देखते हो, आप इसको निकाल सकते हैं. मीन्स व्हाट इज द आइगन वैल्यू, दैट इज द वैल्यू दैट सिंपली स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन दैट पर्टिकुलर वेक्टर दैट इज मेंटेनिंग इट्स ओन स्पेन. अपने स्पेन पे आपके पास में मेंटेन्ड है, एंड दैट वेक्टर विल बी व्हाट, द आइगन वेक्टर हियर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस वन. सो आई थिंक दिस इक्वेशन इज क्लियर इन योर माइंड हियर.